गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्पेशल स्टेटस फॉर लद्दाख। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक वेल नोन क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनको डिटेन कर लिया गया था दिल्ली बॉर्डर पर, क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लद्दाख को जो है वो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए, जिसमें कि ग्रेटर ऑटोनॉमी और कल्चरल आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन की वो डिमांड रख रहे हैं। तो इंडिया जो है वो एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म फॉलो करता है, मतलब कि सभी स्टेट्स और रीजन्स इंडिया में सेम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स पर भी जो है कुछ एरियाज़ को एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में जो है वो डाला गया था। उसी को ही बाद में हमने 5th और 6th शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना दिया गया। ठीक है, तो गोल ये था कि ये जो ऐसे रीजन्स हैं ये अपने कस्टम्स और लॉज को बचा कर रख सकें और धीरे धीरे जो है उनको मेन स्ट्रीम में बाद में इंटीग्रेट कर लिया जाए। जो 5th शेड्यूल है वो उन शेड्यूल एरियाज़ को जो है वो पर अप्लाई होता है जहाँ पर सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनके लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स भी बनाई गई हैं। गवर्नर के पास अथॉरिटी होती है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड और ओवरसी कर सकते हैं मनी लैंडिंग बिजनेस को इन दीज एरियाज़। गवर्नर जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई लॉज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इन एरिया में नहीं लगेंगे या फिर मॉडिफिकेशन के साथ लगेंगे। ठीक है, तो करंटली 10 इंडियन स्टेट्स को 5th शेड्यूल में रखा गया है। जो 6th शेड्यूल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं ताकि ग्रेटर कंट्रोल दिया जा सके लोकल कम्युनिटीज़ को गवर्नेंस के ऊपर। तो ऑटोनॉमी मिलती है उन्हें गवर्नेंस में, मतलब कि जैसे लैंड यूज़, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम्स, इन मैटर्स पर उन्हें जो है वो ऑटोनॉमी मिलती है। जुडिशल पावर्स दी गई हैं, मतलब लोकल कोर्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पर जो है अगर दोनों पार्टीज़ शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो लोकल कोर्ट से उनका फैसला कर सकते हैं। तो बेसिकली 6th शेड्यूल में ज़्यादा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशल और फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं। इवन टैक्सेशन की भी पावर्स उनके पास दी गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371 दिए गए हैं ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लद्दाख जब से यूनियन टेरिटरी बना है वहाँ पर लोकल एक्टिविस्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दी जानी चाहिए अंडर 6th शेड्यूल और लद्दाख को, ताकि वो अपने फ्रेजाइल इकोसिस्टम को और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्रैकडाउन ऑन सिविल सोसाइटी एंड एनजीओज इन इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईटी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कंक्लूड किया है कि बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो एफसीआरए की वायलेशंस कर रहे हैं, इसलिए उनके एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? बेसिकली ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो इकट्ठे हो जाते हैं और मैनेज और प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी के लिए। तो जितने भी इंडिया में अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस देखें जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट और मार्केट काम कर रही हैं और उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट या पर्पज़ है और या फिर वैल्यूज़ हैं, उनको हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पर कहते हैं। तो ये प्राइवेटली रन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, सेल्फ गवर्निंग होती हैं, वॉलंटरी होती हैं और ये कई डिफरेंट लेवल्स पर काम करती हैं, चाहे वो लोकल ग्रास रूट लेवल हो, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल हो। वाइड रेंज ऑफ इशूज़ के ऊपर ये काम करती हैं, चाहे सैनिटेशन हो, हाउसिंग हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, मेंटल हेल्थ हो। तो ये वॉलंटरी होती हैं, बॉटम अप ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये इंटरमीडियरी की तरह काम करती हैं सिटीजन्स और स्टेट के बीच में, सपोर्ट करती हैं सर्विस डिलीवरी ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 3.1 मिलियन रजिस्टर्ड एनजीओज हमारी कंट्री में 2015 और 16 के आंकड़ों के हिसाब से थे, और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट और सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। एप्लीकेबल जो है एफसीआरए जो है वो एप्लीकेबल होता है उन सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने वर्क के लिए एक्सेप्ट करती हैं, और गोल ये रहता है कि वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सभी एनपीओज के लिए जो है वो इंक्रीज़ कर सके। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का वो होता है ग्रास रूट उनकी प्रेजेंस, जहाँ पर वो बेस्ट इक्विप्ड होती हैं कि वो रिमोटेस्ट एरियाज़ और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो है वो पहुँच सकती हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं? ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी के इशू हैं ऐसी जो है आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और इनकी डिपेंडेंसी है जो है फाइनेंशियल सोर्सेज के ऊपर, एक्सटर्नल ग्रांट्स और डोनेशंस के ऊपर। तो इसलिए उनकी सस्टेनेबल भी नहीं रहता है काम करना। तो आपस में भी जो है वो सिविल सोसाइटी को कंपटीशन है। ओके, तो गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से एफसीआरए जो है वायलेशंस पर जो इंडिया के थिंक टैंक्स हैं या फिर एनजीओज हैं उनके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन कर रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो क्रैकडाउन जो है इन एनजीओज को जिनके खासकर फॉरेन लिंक्स हैं उनको हर्ट कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फूड सेफ्टी लॉज इन इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली मैंडेट किया है कि फूड एस्टैब्लिशमेंट्स उनको अपना प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना पड़ेगा नाम ऑपरेटर का, प्रोपराइटर का, मैनेजर का और रेलिवेंट पर्सोनल का कस्टमर्स को, ताकि जो है वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। तो अभी जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर ऑर्डर्स जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ने निकाले थे उनके ऊपर स्टे लगा दिया था कि ये जो है ऑर्डर्स पास करने की अथॉरिटी सिर्फ FSSAI के पास है। ठीक है, तो FSSAI जो है उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो रजिस्टर या ऑब्टेन कर सकते हैं। जो भी कोई फूड का बिज़नेस करना चाहता है इंडिया में तो वो रजिस्टर या ऑब्टेन करना पड़ता है उन्हें लाइसेंस FSSAI से। और FSSAI ही जो है वो मॉनिटरिंग और रेगुलेटिंग करती है फूड प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इम्पोर्ट ऑफ फूड की सेफ्टी और क्वालिटी। ठीक है, तो स्मॉल स्केल फूड बिजनेसेस हों चाहे लार्ज स्केल फूड बिजनेसेस हों, उनको लाइसेंस लेना ही पड़ता है और उनको जो है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना पड़ता है ये लाइसेंस अपने फूड प्रेमिसेस पर। जो ओनर्स के आइडेंटिटी और इस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन जो है वो ऑलरेडी मैंडेटेड है कि उसको जो है वो फ़ोटो ID के साथ डिस्प्ले किया जाए। लाइसेंस जो FSSAI ने इशू किया है वो भी डिस्प्ले किया जाए। अब उत्तर प्रदेश के जो डायरेक्टिव्स हैं वो कुछ पेनल्टीज़ तो नहीं बताते हैं नॉन कंप्लायंस के बारे में, लेकिन सेक्शन 58 के मुताबिक जो है स्पेसिफिक पेनल्टी जो है या फाइन्स जो है वो 2 लाख रुपए तक के लगाए जा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सेक्शन 94 का क्लॉज 1 जो FSSAI का है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी दी जा सकती है रूल्स बनाने के लिए फूड अथॉरिटी द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इन जो स्टेट्स का कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि FSSAI के जो प्रोविजंस हैं उनको एफिशिएंटली स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो कोई भी रूल अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना भी ज़रूरी है। ओके, तो पहले क्यों फिर जो है स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो डायरेक्टिव्स को कैंसिल कर दिया। तो पहले के डायरेक्टिव्स में कहा गया था कि जो ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये इंडिविजुअल्स को अपने रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटीज़ बताने पर फोर्स करेगा। पटिशनर्स ने कहा था कि ये बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो है करवाएगा ये डायरेक्टिव्स, और प्रैक्टिस ऑफ अनटीचेबिलिटी से शुरू होगी जो कि वो बैंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यूपी गवर्नमेंट ने बोला था कि हमने CCTV कैमरास लगाने को भी कहा है फूड एस्टैब्लिशमेंट्स में ताकि पब्लिक हेल्थ को एनहेंस किया जा सके। उन्होंने कुछ फूड अडल्ट्रेशन इंसिडेंट्स दिखाए थे जिसमें कि ह्यूमन वेस्ट या अदर अनसैनिटरी सब्सटेंसेस जो है वो यूज़ किए जा रहे थे। तो इसलिए फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सारथी 1.0। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सारथी 1.0 जो है वो लॉन्च किया है ताकि एम्पावर किया जा सके डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को। तो बेसिकली अवेयरनेस गैप जो है ये ब्रिज करेगा लीगल असिस्टेंस जो कि प्रोवाइड की जाती है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के साथ। तो एक सिनर्जी भी क्रिएट करेगा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो लॉन्च किया है झारखंड में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए ट्राइबल विलेजेस में। तो इसमें क्रिटिकल गैप्स जो हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड के, उनको जो है वो 25 इंटरवेंशंस के थ्रू 17 लाइन मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एड्रेस करेंगी। और इसको प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के अंडर ही जो है वो या फिर महाअभियान के अंदर ही जो है वो प्लान किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलर इक्लिप्स। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में एक एनुअलर सोलर इक्लिप्स लगा था। अब ये कब लगता है सोलर इक्लिप्स? जब मून जो है वो मिडल ऑफ अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तो मून जो है बेसिकली जो लाइट ऑफ द सन है वो या तो फुली या उसको पार्शली ब्लॉक कर देता है। और ये सिर्फ जब न्यू मून का पीरियड जिसको हम हिंदी में अमावस कहते हैं सिर्फ तभी ये जो है होता है सोलर इक्लिप्स। और ऐसे ही जो लूनर इक्लिप्स होता है वो सिर्फ फुल मून के पीरियड में या फिर पूर्णिमा के टाइम पर ही होता है। तो मून जो है वो अर्थ को सेम प्लेन में नहीं ऑर्बिट करता है जैसे कि अर्थ सेम प्लेन पे ऑर्बिट करती है सन को। तो इसलिए जो है मून का जो ऑर्बिट है वो लगभग 5 डिग्रीज टिल्टेड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आता है तो उसकी शेडो या तो बहुत हाई होती है या फिर बहुत कम होती है जो है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून
इंटायरली सन को ब्लॉक कर लेता है। एनुलर सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून पास कर रहा होता है फ्रंट ऑफ द सन से, बट वो एक इतने फारदेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ से होता है कि जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता है और एक रिंग बना देता है कभी कभी, ठीक है। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून जो है वो जस्ट पार्ट ऑफ द सन को जो है वो ब्लॉक कर रहा होता है। हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब एक्लिप्स शिफ्ट होता है एनुलर और टोटल दोनों के बीच में, क्यों, जैसे कि शैडो जो है मून की वो अक्रॉस द ग्लोब जैसे जैसे फैल रही होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स जो है ट्रैकर ने रिवील किया है कि सिर्फ 10% नेशंस ने अपनी बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स जो है वो फुलफिल की हैं। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर जो है वो न्यू टूल डेवलप किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा, ताकि बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज़ जो हैं वो एक्सेसिबल हो सकें सभी स्टेक होल्डर्स को। तो जो ये ट्रैकर है बेसिकली क्रूशल ब्लूप्रिंट दे रहा है कंट्रीज़ को कि वो अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस और इंटरनेशनल टारगेट्स को मीट करने के लिए वो ट्रैक कर सकें, ठीक है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है जिसको ये ट्रैकर जो है जिससे रिलेटेड टारगेट्स को ट्रैकर जो है वो ट्रैक करना चाहता है। तो ये 15th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो है होल्ड किया गया था दिसंबर 2022 में, इसको तब अडॉप्ट किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और ये एक बोल्ड पाथ दे रहा है ग्लोबल हार्मनी विद नेचर के लिए बाय 2050। इसमें 23 टारगेट्स हैं जो 2030 तक के लिए हैं और 4 ग्लोबल टारगेट्स हैं जो 2050 तक के लिए हैं, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को करंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व कर सकें। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is special status for Ladakh. This topic is important for your governance section and also your polity section. So Sonam Wangchuk is a well-known climate activist and he was detained at the Delhi border while leading a protest because he was trying to pressurize the central government to grant Ladakh a 6th schedule status under the Indian constitution. So basically this demand has been growing in Ladakh, where people are seeking greater autonomy and protection of their cultural heritage. Similar demands have also been raised in states like Arunachal and Manipur, where ethnic groups are seeking special provisions under the constitution. So India is not a symmetrical federal country. It is in fact asymmetrically federal, which means that not all states or regions in our country enjoy the same level of autonomy. Okay, so this pertains to the British colonial era policies which created excluded and partially excluded areas under the Government of India Act of 1935 so as to manage tribal regions separately from the rest of the country. So after the independence, we used these excluded areas and partially excluded areas definition as the 5th and 6th schedules of the constitution, and these were inspired by those colonial era policies. Okay, so the goal was to allow these regions to maintain their customs and laws while being gradually integrating them to the mainstream. So what is the 5th schedule areas of the constitution? So these areas are those basically which have scheduled areas, and they are having significant tribal population. Okay, so tribes advisory council are established in these areas to guide state governments on matters related to tribal welfare. Governor has the authority to regulate the transfer of tribal land and oversee money lending businesses in these areas. Governor can also direct that certain laws by parliament or state legislature either do not apply or apply with modifications in these areas to safeguard tribal interests. So currently 10 Indian states have been designated under 5th schedule. So what is the 6th schedule? This one is more expensive and it applies to certain regions of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. So here autonomous district councils have been formed to give greater control to local communities over governance. So these ADCs can legislate on matters like land use, inheritance, marriage and social customs. Of course, they require the approval from governor, and ADCs have also been empowered to establish local courts to handle cases where both parties are members of the scheduled tribes. So these councils can also collect land revenue and impose taxes on professions, trades and other activities. So in short, 6th schedule is more
has more executive, legislative, judicial, and financial power as compared to fifth schedule areas. Okay, so various northeastern states already enjoy special provisions under Article 371 of the Constitution. Since Ladakh has become a union territory, local leaders and activists have been demanding the special constitutional protections under sixth schedule, so as to preserve the region's fragile ecosystem and protect the unique cultural identity of the Ladakhi people. Okay. So the next topic is crackdown on civil society and NGOs in India. This topic is important for your governance section. So following the searches, the Income Tax Department has recently concluded that some of the NGOs have violated provisions of the FCRA Act 2010. So therefore their licenses were cancelled. So basically a civil society organization is a group of like-minded people who manage and plan activities for the betterment of the community, and CSOs are defined as all non-profit organizations which are independent from the government and the market. Okay, and those who operate around common interests, purposes, and values. So CSOs are basically privately run, not for profit, self-governing, and voluntary, and they operate at different levels from local grassroots to national and international level. So they work across a range of issues like sanitation, housing, women empowerment, mental health, etc. They are voluntary, bottom up, grassroots organizations located in specific communities that cater to the local needs of the areas that they work in. Okay, so they act as intermediary between citizens and state by representing the voices of the poor and vulnerable groups. They also support service delivery. They help in drafting policy action plans and legislation, research, and evidence. Okay, so the CSOs are were about 3.1 million. In there were about 3.1 million registered NGOs in the country between 2015 and 16, and they are governed under the Societies Registration Act, Trust Act, and Section 8 of the Companies Act. And FCRA is applicable to all those non-profit organizations which accept foreign contributions for their work. So the goal is to increase the transparency and accountability of NPOs, and that's why the registration of foreign contributions must be renewed every 5 years for them. So the strongest area of CSOs is their grassroots presence and how they are best equipped to reach the remotest areas and sections of our country. But they are facing certain challenges like transparency and legitimacy with respect to the level of information expected of them, the degree of scrutiny that they are subject to, specifically around their funding, and because of the high portion of financial resources that are given to them through external grants and donations, it increases the dependency of these organizations, and it also questions the sustainability. More competition is also there within civil society. Okay, so government has been cracking down on those civil society organizations which have been violating the FCRA provisions, and this is being called as the crackdown on CSOs on a whole in India. Okay. So the next topic is food safety laws in India. This topic is important for your governance section. So Uttar Pradesh government has recently mandated that all food establishments prominently display the names of their operator, proprietor, manager, and relevant personnel to the customers. So in July also, Supreme Court had stayed similar orders which were issued by Uttar Pradesh and Uttarakhand during the Kavan Yatra, stating that only the competent authority under FSSA 2006 Act could issue such directives. So, what is the FSSAI registration process in India? So, anyone who wishes to operate a food business in India must register or obtain a license from FSSAI, which is formed under the FSSA Act. And this body is responsible for monitoring and regulating food processing, distribution, sale, and import to ensure food safety and quality. So, according to the 2011 rules, both small and large scale businesses are required to obtain a license from the Food Safety and Standards Authority of India, and this license must be prominently displayed at all times within the premises. And apart from that, the owner's identity and establishment's location are mandated to be displayed through the photo ID and license issued by the FSSAI. Okay, the UP government's recent directives do not specify the penalties for non-compliance, but under Section 58 of this FSSA Act, anything in contravention to this act without a specific penalty, fines may reach up to
2 lakh rupees. Okay. Section 94 clause 1 of the FSSA grants the state governments the authority to make rules also, subject to the approval of the food authority and the central government. And the commissioner of food safety, which is appointed by the state government, is responsible for ensuring the efficient implementation of FSSA. Okay. So any rules which are made by the state government must be presented to the state legislature for approval as soon as possible. So the earlier directives were challenged in the court on the grounds that they were effectively forcing individuals to disclose their religion and caste identities. The petitioners claimed that directives could lead to the economic boycott of Muslims, which is infringing their right to practice their profession. And these orders were also practicing untouchability, which is banned under Article 17. The UP government had stated at that time that those directives also included the installation of CCTV cameras at food establishments, and a statewide verification campaign was also launched so as to enhance public health. Okay. So the next topic is Sarthi 1.0. This topic is important for your social issues and your governance section. So recently, Department of Social Justice and Empowerment and the National Legal Service Authority has launched this Sarthi 1.0, which is an initiative intended to empower disadvantaged communities, including SCs, OBCs, senior citizens, transgender people, victims of alcoholism and substance abuse, etc. And this basically aligns with the United Nations agenda for sustainable development, and this collaboration would aim to bridge the awareness gap and provide legal assistance to ensure the effective implementation of social welfare programs. Basically, it also offers a synergy between executive and the judiciary so as to ensure that social justice is further strengthened. So the next topic is Dharti Abba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan. So this topic is important for your social issues. PM Modi recently launched this Dharti Abba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan in Jharkhand, which aims to foster holistic development of tribal villages. It envisions saturation of critical gaps in social infrastructure, health, education, and livelihood through 25 interventions implemented by 17 line ministries of the Government of India. So this has been planned based on the learning and success of the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Mahabhiyan program, which was launched in November 2023. So the next topic is solar eclipse. This topic is important for your science and tech section. So an annular solar eclipse was visible in parts of South America, while a partial solar eclipse was visible in parts of South America, Antarctica, North America, Atlantic Ocean, and the Pacific Ocean. So what is solar eclipse? It takes place when the moon moves in the middle of Earth and Sun, and the moon blocks the light of the sun, either fully or partially, which casts a huge shadow on some parts of the world. So a solar eclipse is witnessed only during the new moon period, when the moon and the sun are aligned on the same side of the earth, and a new moon occurs about 29.5 days, because that is how long it takes for the moon to orbit earth, and it takes place only between 2 to 5 times annually. Okay, so it is because the moon does not orbit in the same plane as earth orbits the sun. In fact, the moon is tilted by about 5 degrees with respect to earth, and as a result, most of the time when the moon is in between sun and earth, its shadow is either too high or too low to fall on earth. Okay, so the total solar eclipse occurs when the moon blocks the sun entirely. The annular solar eclipse occurs when the moon passes in front of the sun, but it is at the near or the farthest point from Earth. So, if it is at the farthest point of Earth, then it looks like a ring of fire. Okay, the sun looks like a ring of fire. In partial solar eclipse, moon blocks just a part of the sun, and in hybrid solar eclipse, it is the rarest type when an eclipse shifts between annular and total as the shadow of the moon moves across the globe. Okay. So the next topic is National Biodiversity Strategy and Action Plans. This topic is important for your environment section. So National Biodiversity Strategy and Action Plans Tracker has revealed that only 10% of the nations have fulfilled their biodiversity commitments ahead of the COP16. So National Biodiversity Strategy and Action Plans Tracker is a new tool developed by the World Wildlife Fund for Nature, and it is monitoring the progress of countries in developing their
national biodiversity strategy and action plans, which align with the goals of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. So the aim is to make biodiversity policies accessible to all stakeholders, and these NBSAPs are crucial blueprints for the countries to outline their strategies to tackle biodiversity loss and meet their international targets. Okay, so what is Kunming Montreal Global Biodiversity Framework? It was adopted during the 15th meeting of the Conference of Parties, and the aim is to support the achievement of sustainable development goals and to build on previous strategic plans. So it also sets a bold path towards global harmony with nature by 2050. So it contains 23 targets which have to be achieved by 2030 and 4 global targets which are set for 2050 to preserve biodiversity for current and future generations. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.